Okay, let the chat box keep buzzing, okay? I think that is really good if we can have your comments as we speak through, right? So last 2 days, we have been discussing what to do when your child is being over pampered by grandparents, right? So are you excited for the third session on over pampering by grandparents? Type excited in the chat box if you're excited for today's session, because we are going to today discuss what are we going to do differently to overcome this problem. Okay. Of course, yesterday we discussed at common solutions, how to reach at a common ground with grandparents, understanding where they are coming from and helping them themselves realize that what is going wrong, right? Now, let's try to understand what can we as parents do differently so that even if there is some over pampering going on, it's okay. It really does not impact your child that much as we really fear. Okay, हम लोग बहुत ज्यादा कई बार छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान हो जाते हैं because we think that we have to be perfect parents. But parents, it's not about being perfect. We will never be able to be perfect no matter what. Perfection जैसी कोई चीज we can just strive for, but we can never be perfect. So let's try to be more present than being perfect. Okay. So सबसे पहली चीज जो हम differently कर सकते हैं, let's start with that, which is weekends. Let's have complete grip on how we are spending time with our children on weekends. Take complete charge of weekends. And when I say take complete charge of weekends, it does not mean that you only have to do everything, or you cannot have time for yourself, or you cannot watch a Netflix show, or cannot go out or talk to friends over phone. No. When I say take complete charge of the weekend, it means that that day be very much aware as to what is going on in your child's life. आपको पता चलेगा कि what kind of things or activities he loves to do at home, and what are the things where you can build more engagement with him. What are the things you can explore newly with him which he would love enjoying, which he would love doing. Okay, so for example, on a weekend also, if the child has been spending 5 days of the week with his grandparents, on the weekend it's not that somehow he will just suddenly start spending all the time with you, right? That will not happen typically. So you can have some rituals that you plan with the child. For example, you could take him for a morning walk. अब मॉर्निंग वॉक का अगर एक रिचुअल बन रहा है तो उसके लिए टाइम पर उठेगा बच्चा, राइट? ऑटोमेटिकली. सो फ्राइडे इवनिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा कि ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू दिस पार्क. यू कैन गो टू अ पार्क वेयर दे आर activities of his own choice. For example, if the child is little grown up, maybe a park which has those gymnasiums and all, open gym, that kind of a place. Or if he has interest in photography, then you could go to some sanctuary or those kind of places which are nearby, where he can try his hand at photography. If it's a small child, then you could take him to a swings park. So basically there can be various things that could be explored. It could be a sports. It could be like, for example, one of my son's friends, they always book a football ground, and on weekends they always go and play together. So it's a batch of around 15-20 friends, or वो अपने school friends और बहुत सारे friends को बुला लेते हैं, and then they all pool in, and then they book sports complex में football ground or किसी school में football ground, and they all go and enjoy. And we also as parents just go, and there we keep taking our morning walks and all. So you can plan something like a morning activity for the weekends with the kid. Then the other thing that you could do is how the child is eating, developing those eating habits. अब आप देख रहे हो कि उसको किस टाइम पर भूख लगती है, what is he asking for, and you could try with new things at that time on weekends when you are with the child. And that is a very good
idea to notice कि okay उसका schedule कैसा बनना चाहिए. Certain things we sometimes don't observe only, but if we are present in the moment, we realize that. So, for example, I'll share one thing. When my kids were growing up, now they are of course 18 and 15, but even now that works for them. And what was one problem that I was facing when they were young? They would not get up after an afternoon nap. And I used to have a big time problem कि ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, कैसे उठाऊं? They are like, Mama, 1 minute, Mama, 2 minutes, but I did not have a solution. So I called up one of my bhabis, uh, who had her kids are much elder to my kids. And I asked कि मैं क्या करूं इस चीज के लिए? You always go out seeking help from people who are experienced. That time I was also working and I did not really know कि इस चीज के लिए किया क्या जाए. और weekends पे I used to feel कि ये problem है because I had to face that problem on weekends. अब मुझे नहीं पता था कि weekdays में what my mother-in-law does about it. बट टिपिकली वो बच्चे सोते हुए कई बार मिलते थे, तो आई थॉट कि ओके लेट मी आस्क माय भाभी. सो शी सेड कि कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ अच्छा सा बना के रखती हूँ. आई टेल किड्स कि ये बना हुआ है तो बन गया है, जल्दी से आ जाओ खाने के लिए. और फिर एक दो बार थोड़ा सा उठाती हूँ तो आराम से उठ जाते हैं. मैंने कहा वाओ दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, लेट मी ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. And till date, even today it worked for my son. He was sleeping and I just said कि बेटा मैंने मैंगोस काट दिए हैं, आप प्लीज उठ जाओ वरना फिर ये ना ठंडा ठंडा नहीं रहेगा. एंड ही इमीडिएटली woke up. So it is something that you can always try, but you have to be present to see कि अच्छा इस चीज का ना क्रिएटिव सॉल्यूशन, जो हम कल बात कर रहे थे, हर चीज का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. बिकॉज सिंपली बहुत चीजों के आंसर्स मिल जाते हैं, राइट? Another thing now which we can do with the children when they like, these are common things. अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे इसका ग्रैंड पेरेंट की ओवर पैम्परिंग से क्या लेना देना है. लेना देना डायरेक्टली नहीं है, बट सी इट्स द कनेक्ट विद योर चाइल्ड. ओके, बिकॉज आपकी जो इमोशनल एनर्जी है ना, वो अगर कहीं पे कुछ पैम्परिंग हो भी रही है, उसके इफेक्ट्स को नेगेट करेगी, राइट? बेसिकली व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट कि बच्चे को प्यार ना मिले, राइट? वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस प्यार से उसकी हैबिट्स ना बिगड़े, राइट? अगर वो टाइम से सोना, खाना, एक्सरसाइज, पढ़ाई सब कुछ कर रहा है और उसको एक्स्ट्रा लव भी मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, राइट? तो हमें अपनी इमोशनल एनर्जी से उसकी हैबिट्स को ठीक करना है, वेदर इट्स ईटिंग हैबिट्स, स्क्रीन टाइम हैबिट्स, व्हाटएवर. सो फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम, अब हम वीकेंड पर तो देख सकते हैं ना कि बच्चा बहुत ज्यादा अगर मोबाइल कर रहा है, तो उसको ये बोलने के बजाय कि आप मोबाइल मत करो, what are the things that we are giving him as a solution to participate in, right? कोई चीज नहीं करो तो बोल दे, लेकिन मैं करूं क्या फिर? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड टेल माई चाइल्ड कि भाई तुम कितना मोबाइल करो मत करो, तो व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स? मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने पियानो भी प्ले कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मतलब वॉट एवर द 10 एक्टिविटीज वुड बी, he'll start telling me all those things. So I know कि नहीं, ये सेंटेंस तो बोलना ही नहीं है. You can always say कि अच्छा आ जाओ, चलो मुझे बताओ दिन कैसा था, चलो कुछ गप्पे मारते हैं. नहीं मम्मा, आप गप्पे वप्पे मत मारो. एंड आई वुड से कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी बात करनी है, तुम्हें नहीं अपना सुनाना तो कोई बात नहीं, मेरी आके हेल्प करो, मेरी बात सुनो, मुझे बात करने वाला कोई चाहिए. आई तो क्लियरली से मेनी टाइम्स, बिकॉज टीनेजर्स को तो बात करने का इतना मन होता ही नहीं है, राइट? So that's a passing phase. All mothers go through that. All teenagers go through that. So take it lightly. Don't take it personally कि ये बच्चे तो दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं. It's okay. Let them be. But keep them close by your emotional energy. So इसके लिए, now again, lot of things depend on really on the child's age. So when we do our meetings with one-on-one connects and all with moms, then we work on particularly that particular age की इसके लिए क्या age appropriate activities होंगी that can be done. But right now I'm just generically sharing things which apply to 7 to 17, some examples from various age groups, right? So for example, if the child is just 7, 8, 9 years old, you could have a bedtime ritual of storytelling, right?
Like, for example, when I was growing up, my dad always used to tell me some or the other story at night for sure. And that time he did not have too many stories. वो 5-6 स्टोरीज ही होती थी, बहुत सिंपल स्टोरीज होती थी. इट वॉज नॉट कि वो किसी बुक से रीड करके कुछ सुना रहे हैं, बिकॉज हमारे पास वैसे भी वी हैड अ लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन, सो वी वुड गेट एंड रीड बुक्स ऑन आवर ओन. बट फॉर हिम हिज set of stories was very simple and small, but we just wanted to listen to that only again and again, right? So storytelling could be one thing. Aajkal to storytelling, of course, it's very easy. On the click of a finger, you just have so many ideas of stories. But आप अपनी stories भी बना सकते हो. So this is something that I have done a lot with my children. You know, इसको बुद्धू बनाना नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मजेदार होता है जब आपको पता है कि योर चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, एंड व्हेन दे आर यंग यू कैन ऑलवेज डू दैट. चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, आप उसी की एक स्टोरी बना करके किसी और कैरेक्टर के ऊपर वो सब चीजें डाल करके आप उसका आउटकम उसको बताते हो. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज ईटिंग नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, तो आपने किसी स्टोरी के हीरो में चाइल्ड को प्रिंस बना दिया, एंड यूर सेइंग कि वो बच्चा कभी खाना नहीं खाता था, एक दिन सपने में भगवान जी आए और फिर इन्होंने कहा कि जो बच्चा खाना खाएगा उसको वो फरारी में रेसिंग के लिए लेकर के जाएंगे या फॉर्मूला 1 रेसिंग में लेकर जाएंगे. वॉट एवर जो चाइल्ड का इंटरेस्ट है आप उसके लिए वो बोलो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर माई सन आई वुड ऑलवेज टॉक अबाउट फुटबॉल में आपको मिडफील्डर का स्पेस मिलेगा, यू नो, वॉट एवर ही लाइक्स टू डू. सो अच्छा मम्मा ऐसा भी होता है. सो यू नो, यू कैन ऑलवेज गो ऑन इंटरैक्टिंग. अब काफी सारे पेरेंट्स आजकल बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, हमारे उसके ऊपर ये सब चीजें नहीं चलेंगी. दैट्स ऑल्सो ओके. यू नो, इट्स नॉट अबाउट कि आपका बच्चा समझ नहीं रहा है आप क्या समझदारी कर रहे हो. जैसे मैं भी बहुत बार ऐसा करती हूँ, तो आई ऑल्सो गेट कॉट. आई एम लाइक, हाँ तो तुम्हें पता है ना मम्मा क्या कह रही है, तो समझ जाओ ना कि व्हाट मम्मा वांट्स. सी, यू आर जस्ट ओपनिंग अप योर हार्ट. आपने डांट कर नहीं बोला, बट आप प्यार से उसको एक चीज समझा रहे हो, उसके लिए अलग अलग तरीके यूज कर रहे हो, तो बच्चा भी समझता है कि मम्मा इज डूइंग इट आउट ऑफ लव फॉर मी. That connect is still getting formed because he's understanding कि मम्मा मुझे बोल रही है, वो इसलिए बोल रही है कि she wants my betterment. एंड उसके दिमाग में ये बात जा रही है कि हाँ मुझे इस पे कुछ करना है. मे बी वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है, बट उसको पता है कि सही क्या गलत क्या है. अब उसके दिल में भी ये बात जा रही है कि मम्मा मुझे चाहती है कि मेरा अच्छा हो, राइट, एंड मुझे इस चीज से ओवरकम तो करना ही है. अब हमें भी तो पता होता है ना कि हमें वेट रिड्यूस करना है, बट हम रोज रोज हर मील में तो नहीं अपना खाना नाप तोल के खा पाते ना. इट टेक्स अस इयर्स एंड इयर्स टू रियली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. तो बच्चा तो फिर अभी बच्चा ही है, सो लेट्स गिव हिम एटलीस्ट दैट मच क्रेडिट, राइट. सो बेड टाइम रिचुअल में बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं. एंड इट कुड बी लाइक एनीथिंग एंड एनीथिंग, everything under the world, under the sun, anything. So it's just that it has to be with a positive energy, something that is age appropriate for your child, something that is your true side of the story. For example, for me, I knew that, you know, I had a lot of issues in school while growing up, in the sense that I was too shy. When I changed my school, I had a lot of issues. When I was young till class 6, it was the same school. I never had any challenges. After that, in class 7, it was a lot of issues suddenly because I was so shy as a child. So I would share that only with the children, and then they would say कि अच्छा तो फिर कैसे क्या, मतलब I'll share कि अच्छा तो फिर एक फ्रेंड होती थी या दो फ्रेंड होते थे तो फिर क्या बात होती थी कैसे. So I'm just sharing my side of the story, and for children to listen कि मम्मी पापा की लाइफ में क्या हुआ, that is something amazing. They just want to listen to that. किसी दिन आप लोग सब एक साथ बैठ के ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो डिस्कस, यू नो, यू कैन आस्क योर इन लॉज इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड कि अच्छा तो मम्मा आप बताओ ना कि जब आप छोटे थे तो आपके स्कूल में कैसे होता था. देन दिल से कि हम तो भाई पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे. तो बच्चा, पेड़ के नीचे कौन पढ़ता है, अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है पहले ऐसे ही होता था, ये एसी वगैरह कहाँ होते थे. सो किड्स के लिए ये सब स्टोरीज भी बहुत एक्सपीरियंशियल होता है. सो ऑन अ वीकेंड यू कुड हैव दिस फैमिली टाइम टुगेदर where grandparents and parents are sitting and talking to the child, and everybody's having a time specifically on, you know, conversation, because हम एक साथ होते तो हैं
बट एक साथ रहते नहीं हैं। तो उस प्रैक्टिस को आपको अलाइव करना है। मे बी you have to take initiative. It may not always come from grandparents. कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो बड़े हैं तो वो इनिशिएट करेंगे ना, उनकी फैमिली में चलता ही नहीं है। बिकॉज वैसे भी कई बार डॉटर इन लॉ को तो एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। बहुत फैमिलीज में ये आज तक चलता है कि वी डॉटर इन लॉज आर आउटसाइडर्स। बट इवन इफ दैट इज सो, आउटसाइडर भी तो जब आता है घर में तो आप एटलीस्ट बैठ के बात करते हो ना। आउटसाइडर कहकर कि मुझे बात करनी, तो आप करते हो बात, राइट? सो यू कैन ऑलवेज से कि चलो आज बैठ के बात करते हैं, तो कोई मना तो नहीं करेगा फॉर श्योर, राइट? सो आप बोल सकते हो कि चलो आई एम मेकिंग पकौड़ाज एंड बच्चा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, चलो हम दादा दादी के लिए मिलके पकौड़े बनाते हैं आज, या समथिंग एल्स। आई मीन वॉट एवर द किड्स वुड लाइक मी बी, कि चलो आपको मैक पफ अच्छा लगता है, आज घर में रेसिपी देखी मैक पफ बनाते हैं। बच्चे से आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स वॉश करवा लो। सो अगर बड़े बच्चे हैं तो ऑफकोर्स दे कैन हेल्प विद चॉपिंग ऑल्सो, दे कैन हेल्प विद वाइंडिंग अप द किचन ऑल्सो. So like right now my daughter is back from hostel for a few days for her vacation, and generally उसका रहता है कि भाई मैं घर पे हूँ तो मेरी पैम्परिंग होनी चाहिए ना, मतलब why should I be doing the household chores, and I'm also fine with that कि बच्चा सिर्फ कुछ टाइम के लिए तो आया है, बट अब उसको काम सिखाना भी है ना. She is already 18, so she also has to learn various things that she will have to manage. So अब उसके लिए आई वुड टेल हर कि चलो ठीक है, अब मेरा लाइव चल रहा है ना रात को, तो आप प्लीज किचन वाइंड अप कर देना, ठीक है? नाउ दैट शी डज विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज पता है कि मम्मा बिजी है, राइट? सो ये सब चीजें धीरे धीरे यू कैन ऑलवेज वर्क टुगेदर विद चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ओवर पैम्परिंग कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको ओवरकम नहीं किया जाता. टुगेदर विद द जॉइंट एनर्जी ऑफ द फैमिली, विद द वाइब्स ऑफ द होम, everything can be seen in the right perspective and everyone can stay happily. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ. कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जब तक कि आपके कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है सच में. सो आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ people who are going through extreme cases. You can always connect one-on-one with me for those kind of cases where you are just completely unable to understand कि क्या किया जाए situation में, because scenarios are so many and I know it is a genuine problem in many homes, and I don't negate that at all. So in that case, I would suggest that you get in touch one-on-one with me. But otherwise, let your children enjoy their bonding with their grandparents. It is something that is providing them a lot of emotional safety. So I hope with that, you remember the main things that you have to do. If there are certain issues that you are facing, just identify two things which you have to work together and talk about that with your husband, with your in-laws, and don't make it a situation of me versus them. Just work together as one team for the benefit of the child. And you know what? It's not like that discipline is always conflict, okay? And you can always create a home where love does not mean overindulgence. And please remember, this applies to you also, not just the grandparents. Love does not always mean overindulgence. So, what talk the walk? Oh, sorry, walk the talk. Whatever you're telling to the grandparents, apply it on yourself too, right? With that, I'll take your leave, and I hope you got some important points from this discussion. And tomorrow we'll meet again at 9:15 p.m. sharp. Till then, keep enjoying, keep rocking. Good night. Bye-bye.